So in this video, I'm gonna draw mandala art on random things. And as you can see, ये video completely inspired होने वाली है शिवांगी शाह से. Also, this is my second time trying mandala art and I'm gonna try it on these things like stone, drawing book cover and a glass. As usual, I'm gonna use these FABRICA ACRYLIC color cause ये बहुत सारे mediums में ना एकदम fit बैठते हैं. तो यहाँ पर ना वाटर का यूज बस पीने के लिए है cause I'm going to apply colors directly without using the water. Let's choose the color first and then I'll start drawing on the stone. Also, I think it's gonna be fun, so let's do it now. तो मेरे पास ना यहाँ पे मंडाला आर्ट के प्रॉपर टूल्स नहीं थे, so I'm using paint brush and cotton earbud for applying the color. And you can use anything for the exception. आपके पास जो भी अवेलेबल है. So dot mandala looks quite complicated, but actual में करते टाइम ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लग रहा है. And कप के मुकाबले ये स्टोन में बहुत ही ज़्यादा easily हो जा रहा है. तो स्टोन पर तो ये कंप्लीट होने वाला है एंड इट ओनली टुक अराउंड 25 to 30 मिनट्स, मतलब बहुत ईजिली हो गया ये तो. आई थिंक यू गाइस शुड ऑल्सो ट्राई इट एंड मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर टैग करना अगर इसे ट्राई करो तो. So here are the final results and I'm really loving it. So the stone is done now और ये ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रहा है एंड अब इसको एक बार ग्लास में ट्राई करके देखते हैं कि इसमें कैसा लगता है. So let's do it. For this glass, I took the reference from Pinterest and वो ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो I thought why not to try it once. I really enjoyed this one cause this is the first time I'm painting on the glass and इसमें same color से draw करना था. like blue तो मैंने अंदर से कर दिया था but white से ही dot form करने थे, तो इतना stress लेने का भी नहीं था बिल्कुल और बहुत easily हो जा रहा था ये. Finally I completed this one as well and मुझे तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है. So it's time of the third and last one and book cover पर भी ना मैं पहली बार ट्राई करने वाली हूँ. So let's see how it goes. This one is going to be the most detailed one till now cause ये वाला ना काफी टाइम ले रहा है. Also I'm going to change multiple colors while making it. Till now it is going quite well. Also purple is one of my favorite colors by the way. Or I know it is out of context but you can also tell me your favorite color in the comment section. Half of the work is completed now and for the other half I'm going to use orange and yellow color texture and I'm really hoping for the best right now. This work is taking so much time but सबसे ज़्यादा अच्छा भी ना ये उन तीनों में से यही लग रहा है. And I saw a lot of people with such book covers, so finally I also have one and I'm really loving it. It is completed now and here are the final results. Hope you guys like it.
details are given in the description below. Also, don't forget to like, comment and share this video. Thank you so much for watching. See you in the next video. Till then, bye bye.